Hi students, good morning all of you. Myself Kusik Biswar, and today I am going to discuss about the lecture number 2 of the chapter that is atomic structure. In the previous class I have already discussed what is nuclear and extra nuclear part of an atom, and today I am going to discuss about what are the properties of an electron, proton and neutron. Okay, ताले आज हमें डिस्कशन करिवा कोन ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नो प्रॉपर्टी कोन. ओके, ताले प्रथमे देखिबा properties of an electron. ओके, ताले देखिबा इलेक्ट्रॉन नो प्रॉपर्टी कोन. ताले हम जानिचे एटम रो चारि पाखरे हमर किए रिवॉल्व करचंदी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करचंदी इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ व्हिच इज कॉल्ड एज एन ऑर्बिट. ताले इलेक्ट्रॉन माने एटम रो चारि पाखरे किछि गोलाकार पथरे बुलुचंदी जाहा को हम कहू ऑर्बिट. ओके, ताले सेही इलेक्ट्रॉन हम कोन करिवा ना तार प्रॉपर्टी पढिबा. ओके, so its first property is it was discovered by J.J. Thomson. ताले आकु डिस्कवर किए करथिले ना J.J. Thomson. ओके, and its next property is the experiment was conducted by Crookes. ओके, ताल से एक्सपेरिमेंट को करिथिले किए ना क्रूक्स आउ तार उद्भावन किए करथिले ना J.J. Thomson. ओके, the name of an electron was given by Stoney. ताले से इलेक्ट्रॉन ना किए देथिले ना जण साइंटिस्ट तांको नाला स्टोनी. ओके, the charge of an electron, the charge of an electron was determined by R.A. Millikan by oil drop experiment. ताले इलेक्ट्रॉन नो चार्ज ये डिटरमाइन करथिले ना आर.ए. मिलिकन by oil drop experiment. Okay, and next one is the charge of an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, जोटा कि नेगेटिव. ओके, ताले इलेक्ट्रॉन नो चार्ज रो वैल्यू केते ना 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ओके, ताले इलेक्ट्रॉन नो मास देखिबा केते द मास of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg or 9.1 into 10 to the power minus 28 gram. Okay, that electron no mass कितना ना 9.1 into 10 to the power minus 31 kg or 9.1 into 10 to the power minus 28 gram. Okay, and next the charge of 1 mole of electron is
The charge of 1 mole of electron is kete 96,500 coulomb. Okay, then 1 mole kon then हम कहे गोटे डजन means kete 12. Okay, सेमती 1 mole means केतेटा इलेक्ट्रॉन, that is 6.023 into 10 to the power 23 number of electrons. Okay, so 1 mole कहला हम कितना लेबा ना 6.023 into 10 to the power 23 number of electrons. ताले 1 mole कहला माने 6.023 into 10 to the power 23 number टा इलेक्ट्रॉन कहबा सहित से समान. Okay, ताले हमें जानि छे गोटे इलेक्ट्रॉन चार्ज होला 1.6 into 10 to the power -19 कूलम. ताले एतिक इलेक्ट्रॉन नो चार्ज केते आमे हम कोन करिवा ना ए नंबर सहित आमे केते मल्टीप्लाई करिवा ना 1.6 into 10 to the power -19 कूलम मल्टीप्लाई करिवा ताले हम आंसर पाइबा केते ना 96,500 कूलम. ओके, एंड नेक्स्ट the mass of 1 mole of electron is 0.55 ग्राम. ताले 1 मोल इलेक्ट्रॉन नो मास केते ना 0.55 ग्राम. ओके, तापरे एंड इट्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज the E by M ratio of an electron, which is otherwise called as specific charge. ताले E by M means कौन? E represent charge and M represent mass. ताले इलेक्ट्रॉन नो चार्ज बाय मास रेशियो केते जोटा कि हम कहले कोन तार ना स्पेसिफिक चार्ज. ओके, ताले तार स्पेसिफिक चार्ज केते होबो ना इलेक्ट्रॉन नो चार्ज जानि जे 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, मास केते जानि जे ग्राम रे नवा स्टैंडर्ड यूनिट 9.1 into 10 to the power -28 ग्राम. ताकि जदि हम डिवाइड करिबी E by M बाहर करिबा त केते पाइबा ना 1.6 into 10 to the power -19 कूलम divided by 9.1 into 10 to the power -31 gram, 10 to the power -28 gram, which is also equal to 1.76. Okay, 1.76 into 10 to the power 8 coulomb per gram. Okay, 1.76 into 10 to the power 8 coulomb per gram. Okay, the next point is electron is considered as the universal particle of a matter. ताले इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करछे कोन ना यूनिवर्सल पार्टिकल ऑफ ए मैटर. काहेकि ना तार चार्ज बाय मास रेशियो बा तार स्पेसिफिक चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड द मटेरियल ऑफ द कैथोड व्हिच इज यूज्ड इन द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. ओके, त जेतला हमें 9 10 रे पढिथिबो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट रे ता विषय बेसी किछि कहूनी. त कैथोड रे एक्सपेरिमेंट रे हम कैथोड रो जो मटेरियल नैथिले ता भीतर हम जो गैस नैथिले. ओके, ताले तमे जो गैस नियो बा जो मटेरियल नियो ताले ता भीतर थिबा इलेक्ट्रॉन नो स्पेसिफिक चार्ज केबेले चेंज होबो नाही व्हिच इज ऑलवेज कांस्टेंट. ओके, so these are the properties of an electron. Okay, and next one is take a screenshot. And next one is properties of proton. It is one of the fundamental particle of an atom. ताल ये मध्ये गोटे कोन ना फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम.
it carries a unit of positive charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ताले ये मध्य तार चार्ज केते ना 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. सेठी इलेक्ट्रॉन नो चार्ज जा थिला एठी प्रोटॉन नो चार्ज या कि साइन डिफरेंट एठी पॉजिटिव से. ओके, and the next one is the mass of the proton is 1.672 into 10 to the power minus 27 kg or 1.672 into 10 to the power minus 24. Okay, and next one is one point in fact is it was discovered by Rutherford. ओके, ताले एई एक्सपेरिमेंट को हमर किए कर दिले ना हमर रदरफोर्ड करथिले. ओके, आको डिस्कवर करथिले. The experiment was performed by Goldstein. ओके, ताले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए करथिले ना गोल्डस्टाइन करथिले आउ डिस्कवर किए करथिले ना रदरफोर्ड. ओके, the specific charge of a proton by E by m ratio. And electron बाहर कर देना ना proton बाहर कर रहा है. E by m means charge by mass ratio. Okay, so what is the charge of a proton? That is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and divided by 1.672 into 10 to the power minus 24 gram. Okay, ताले तार वैल्यू कितना होगा ना, which is also equal to 9.5 into 10 to the power 4 coulomb per gram. ओके, ताले स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन कितना है ना 9.5 into 10 to the power 4 coulomb per gram. ओके, take a screenshot. Very good. And the next one is properties of neutron. ताले न्यूट्रॉन जानि जे तार चार्ज है 0. ओके, ताले इट इज चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम. ताले डिस्कवर किए करथिले ना जेम्स चाडविक. ओके, इट वाज discovered by James Chadwick. Okay, and its next one is it is one of the chargeless fundamental particle of an atom. ताले तार चार्ज कितना ना 0. ओके, कारण ना न्यूट्रॉन काहेंगी इट इज न्यूट्रल इन नेचर. ओके, and the next one is the mass of a neutron is 1.675 into 10 to the power minus 27 kg or 1.675 into 10 to the power minus 24 gram. Clear all of it?
And next one, the specific charge of a neutron is 0 by electron charge के 0 mass के 1.6758 into 10 to the power minus 24 gram, which is also equal to 0. 0 by something is also equal to 0. Okay. So these are the properties of an electron, proton and neutron. Okay.